Everyone, this is Muhammad Arif and the topic is going on fractions and rational numbers. Today's topic is reciprocal of fraction and its use in division. So what is reciprocal? If we have a fraction a upon b, so what will be the reciprocal of a upon b? Reciprocal of a upon b will be the 1 upon that fraction. 1 upon that fraction. If we have a upon b, then reciprocal of a upon b will be 1 upon a upon b, that is b upon a. b न्यूमरेटर पर चला जाएगा, b का मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर में और a एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन a. रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b विल बी b अपॉन a. सपोज वी हैव 3/7, देन रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 विल बी 1 अपॉन 3/7. 7 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट 7/3. सपोज वी हैव 1/4 एज अ फ्रैक्शन, सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 विल बी 1/1/4 दिस फ्रैक्शन. तो 4 मल्टीप्लाइड होगा इस 1 से, इस न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 4/1, दैट इज 4. नाउ व्हाट इज यूज ऑफ दिस रेसिप्रोकल इन division? How to use it? Suppose we have two fractions like a upon b and c upon d. Then how to use these in division? Suppose we have to divide a upon b by c upon d. This will be shown as a upon b upon c upon d. This is a little bit typical, so we just find reciprocal of c upon d. So we find reciprocal of c upon d, that will be 1 upon c upon d. This is d क्या होगा, d होगा मल्टीप्लाइड 1 से न्यूमरेटर से, बट d अपॉन c, तो ये d अपॉन c हो गया. अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन c. a upon b multiplied by reciprocal of c upon d, that is d upon c. a upon b को मल्टीप्लाई करेंगे c upon d के रेसिप्रोकल से, जो कि है d upon c, यानी इसका उल्टा. a upon b multiplied by d upon c, ad upon bc. This is your answer. So let's take an example. Suppose we have 15/24 and is to divide by 3/4. So we write 15/24 divided by 3/4. 15/24 divided by 3/4. So reciprocal of 3/4 will be what? 4/3. Reciprocal of 3/4 is 4/3. So we write 15/24 multiplied by, here divided by 3/4, so multiplied by 4/3. Simplify it. 4 1s are 4, 4 6s are 24, 3 1s are 3, 3 5s are 15. So 5/6. This is your answer. रेसिप्रोकल का यूज़ इतना है कि जब किसी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, जो फ्रैक्शन डिवाइड होती है उसको डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं. इसमें 15/24 था डिवाइडेड बाय 3/4. सो
इस साइन को, डिवीज़न के साइन को बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन में और इसको उल्टा कर देते हैं, 3/4 को 4/3 में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। Rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers are that numbers which can be expressed in the form of a upon b, which can be expressed in the form of a upon b, where a and b are integers. A and b are integers, but b cannot be 0. B does not equal to 0 is called as rational numbers. Is called as rational numbers. Rational numbers are that numbers which can be expressed. Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of a upon b, where a and b are integers, but and b does not equal to 0. So let's take an example. इंटीजर्स ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कैसे? ए की जगह पर कोई इंटीजर ले लें, सपोज वी टेक 5 एंड वी टेक 7. दिस इज़ अ रैशनल नंबर 5/7 एंड ए इज इंटीजर, बी इज इंटीजर एंड बी does not equal to 0. b 7, that is not equal to 0. Next we can take -3, and integers can be positive and negative both. -3/5, this is also a rational number. If we write 0, then how can we say that this is a rational number? Because 0/1 is also 0. So this is an integer, this is an integer, and this is also an integer and does not equal to 0. So this is a rational number. But we cannot write 1/0 as rational number because b cannot be 0, because this is undefined. So all natural numbers, whole numbers, integers and fractions are रैशनल नंबर्स. सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. 1, 2, 3 दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. एंड इंटीजर्स वो स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट से, -3, -2, -1 एंड 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन टू प्लस इनफाइनाइट. दे आर ऑल रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट, positive and negative rational numbers. If in a rational number its numerator and denominator are both positive or both negative, then it is said to be positive. Suppose we have a rational number a upon b and its numerator and denominator are both positive or both negative, then those rational numbers are positive. Then it is said to be positive rational number, because here both numerator and denominator are positive, so this is positive. And here numerator and denominator are negative, so they can be cancelled, its sign, and it will be a upon b. They are always positive. But suppose we take an example. If we have 5/9, this is positive because numerator is positive and denominator is positive. Let's take another example. 3/5, this is also positive. And -3/-7,
so numerator is negative, denominator is negative, so both numerator and denominator is negative, so the rational number is positive because we can cancel these sign. We get 3 upon 7. This is positive. Next, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is a positive integer and another is a negative integer. That means if in a rational number either numerator or denominator is negative, in simple language, either numerator or denominator is a negative. सपोज वी हैव ए अपॉन बी, इनमें से कोई एक अगर नेगेटिव है, कोई भी एक, और इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई एक, सपोज वी हैव माइनस ए अपॉन बी और ए अपॉन माइनस बी, सो these rational numbers are said to be negative rational number. We have some examples like 1 upon minus 1 upon 2, 3 upon minus 5, minus 62 upon 7, 38 upon minus 9. These are negative rational numbers. Next is absolute value of a rational number. Absolute value of a rational number. What is absolute value of rational number? The absolute value of a rational number is a rational number with no regard to its sign. जिस rational number में इसका कोई sign नहीं बचता है उसको बोलते हैं absolute value of rational number. Like we have suppose 3 upon 5. We take it with mod. This is called as mod. Mod 3 upon 5 will be mod 3 upon mod 5 is equal to 3 upon 5. जब किसी नंबर पर मॉड लगाते हैं तो उसके सारे साइन नेगेटिव और पॉजिटिव ख़त्म हो जाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बचती है. पॉजिटिव लिखते नहीं हैं इसलिए शो नहीं होता है, नेगेटिव साइन लिखते हैं इसलिए शो होता है. सो इफ़ वी हैव minus 3 upon 5 and we have to find the absolute value of rational number, this rational number, we just add mod minus 3 upon 5 is equal to mod minus 3 upon mod 5. This is 3 upon 5. This is the absolute value of this rational number. Thank you.